Hey everyone, welcome to ChaatNChat. My name is Josh. I'm Miguel. And we are watching Family Man Season 1, Episode 4. If you have not watched the previous episodes, I'll put the link to them in the description below. We're getting really into this now. We're sitting here. We're going to try to plan on watching 4 of them this evening. Pretty excited to get into this next one because I want to see what happens with his wife and that dude. Like, what the heck? Miguel was mentioning in between the 2 episodes that he found it interesting that the in-laws were actually fighting about the language of teaching the grandkids the language, and I said that's actually really common. I've seen it quite a bit. Just shows the nationalism element that's running through this theme. And I mean, because India is a country full of tons of languages. There's over 26, something like that. There isn't just one language. So even though I speak Hindi, I try to watch other languages as well because there's interesting content from all over India. So. All right, let's get back into it. और अगर आप तक नहीं किया, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक बटन पर थप्पड़ मारो। ओरिजिनल है भाई, डायरेक्ट बिल्डर से ही लिया। गेस्ट लिस्ट कैसे मिली तुझे? वो तो आराम से मिल गई, पब्लिक इवेंट है ना। गेस्ट लिस्ट देखी आपने? सारे fake license plates. हम शाम तक यहीं रुकेंगे। ठीक, उसके बाद निकलेंगे। ठीक है भाई। मोबाइल ऑफ है ना सबका? जी भाई। फोन स्विच ऑफ है काफी टाइम से। लास्ट नोन लोकेशन बिंडी बाजार। What are they planning? सिग्नल्स के सीसीटीवी कैमरा से कुछ मिला? नथिंग सर। वैसे भी भिंडी बाजार में ज्यादा कैमरास नहीं है। चेक है। फोर्स वन को बोल की अपनी फील्ड यूनिट भिंडी बाजार में भेजे। सिविल, नो यूनिफॉर्म। मस्त लग रहा ना? चलेगा। भाई, यूनिफॉर्म भी रेडी है। Wow, they're not holding back. They're getting all the steps in. दिमाग तो नहीं खराब तेरा? गेट पे पुलिस होगी, चेकिंग होगी। वो लड़के सिर्फ मटन लेके जा रहे थे एक बार। उन्हें देखा नहीं उन लोगों ने उनके साथ क्या किया? वहाँ खाली हाथ नहीं जा सकते मेरे भाई। जरूरत पड़ेगी तो छिपा देंगे, कुछ नहीं मिलेगा हमें। और सुन, करीब पे कुछ मत बताना, ठीक है? मेरा दिमाग खा जाएगा सारा। उसे पता था कोई उस पर नजर रखे हुआ है। बस पॉसिबल से अचानक ऐसे ब्लैकआउट, या तो ये प्री प्लान था या फिर उसकी किस्मत अच्छी थी। एक आदमी ने स्कूटर में बम रख के उड़ा दिया। I think it was planned because when the building went blackout, there were other buildings with lights on. What's the next step? हमें सर्च वारंट चाहिए होगा as soon as possible. उसके कमरे में घुस के सर्च करें तो शायद कुछ मिल जाए सर। अगर कुछ नहीं मिला, we have only one option sir. भिंडी बाजार खाली करवाना पड़ेगा। That would be intense. I mean, since that was their last location, that was what they would do, but I don't think that's their target. It's some event that's happening. Wouldn't they think to look and see if there was a big event in that area? Oh man, look how big the city is. There's events happening all over the city every single day. I mean, they couldn't do that. They could basically at least have a profile or a guesstimate of. English assignment complete की कि नहीं? Mom, please. क्या माँ please? किया कि नहीं? यार अपने बेड पे जाके सोनो। Is this sleeping in morning or they're going to bed? No, it's. पापा कहाँ हैं? पता नहीं। फिर से ऑफिस गए हैं क्या? शायद। माँ, पापा इतना काम करते हैं, तो हम लोग के पास पैसे होने चाहिए थे। We should be rich, ना? हाँ, पीरियड। If only that's the way it worked. ज्यादा सोने से ब्रेन सेल्स कम होते। चलो, उठ जाओ। माँ, संडे है। तो क्या हुआ? उठ के असाइनमेंट करो, चलो। Don't worry, 2 मिनट लगेगा असाइनमेंट करेंगे। स्माइली कौन सा है? Show, I will show you. Don't worry. मैं तुम्हारे टेक्स्ट नहीं देखूँ। It's okay. Oh jeez, playing with fire with that one. आप ही देखेंगे ना अंदर तो पता चलेगा 2-3 दिन से कुछ ना कुछ हो रहा है। These guys are going to do the room. They're gonna goof it up. उसको बोलो बेड के पीछे दे। बैठ जा, आगे भाग रहे। लोकर। एक काम करो, उसको बोलो राइट साइड में बुक शेल्फ के ऊपर देख। त्या बुकच्या वरती बघ। लॅपटॉप मिल गया सर? हाँ, घेऊन ये इकडे। दाखव बरं। Finally, dude. No, he's a plant. I could find something, but yeah, if they knew that he was being watched, he would probably not leave anything behind. They keep showing her relationship with this patient. I'm curious if something's going to happen. Because they both come from the same area.
Remember? They talked. Yeah. And I'm just wondering if... तुम्हें लगता है मैं टेररिस्ट हूँ? मैं क्या सोचती हूँ उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तुम्हें लगता है ना मैं बुरा आदमी हूँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम बुरे आदमी हो या नहीं। मैं हूँ बुरा आदमी। बहुत गलत काम किया है मैंने। जो भी किया है लाइफ में, सब कुछ गलत किया। I also suspect she might be a plant. पता है वहाँ पहुँचते ही आईसिस वाले सबसे पहले क्या करते हैं? पासपोर्ट लेके फाड़ के फेंक दे, पूरी जिंदगी सड़ते रहो उधर। क्या बोला था कैलिफेट के बारे में? दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, सोने की सड़कें होती है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्जी होती है। कोई गम नहीं होता, बस एक नूर होता है। Yeah, I don't think anything like that exists anywhere. Because I really need help right now. मेरी अम्मी को लगता है कि मैं अभी भी गल्फ में हूँ। मर भी जाओ चलेगा, मुझे बस एक बार अपनी अम्मी को देखना है। Maybe he's trying to get on her sympathetic side so that she could help him get a message out. But it's not a message to his mom. Maybe it's a message to the group. So, where are you taking me? Treat for your new job, right? अरे ट्रीट तो तुम मुझे दोगी, वो भी बाद में। फिलहाल तो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। अच्छा, you like Italian or? I love Italian. Perfect place. I love Italian. ऐसा लग तो नहीं रहा कि तुमको असाइनमेंट करने जा रही हो। Shut up, mind your own business. They really nailed it on the sibling, like, relationship. सर क्या आप यहाँ ही खड़े होने वाले हैं? क्यों? क्योंकि थोड़ा टाइम लग सकता है इसीलिए। Okay. Meaning, give me space, bro. भरा पड़ा हुआ यार ये फाइल्स और पेपर वर्क के नीचे। दिल्ली से बॉसेस भी आए हुए। अच्छा। हाँ तो तुमने मैसेज किया था ना, तुम्हें बात करनी है, बोलो ना। वो कुछ नहीं, मैं बाद में बात करती हूँ। अभी करते हैं ना यार, मैं फ्री हूँ। नहीं, नथिंग अर्जेंट, मैं घर आके बात करती हूँ। तो अभी क्या हूँ? यही हूँ, कुछ काम था इसलिए बाहर आ गई। कॉलेज का भी काम था, so I thought I'll sit somewhere and finish it off. Anyway, listen, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। Now he's got to start checking her. I don't even know why I'm lying to Shri यार। And he wonders why he's eating, smoking, drinking, and stressing. He's got a lot of stress. अभी क्या हुआ? सूची झूठ बोल रही थी यार। सूची कुछ तो छुपा रहे थे। तो तू ना दिमाग के कुछ ज्यादा ही घोड़े दौड़ा रहा है। नहीं, मैं तड़प रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ। अब एक झूठे को लग रहा है कि कोई झूठ बोल रहा है तो सच ही होएगा फिर। Oh, even more so. अजीत, ये एक नंबर ट्रैक करना है। हेलो। लास्ट लोकेशन चाहिए। तिवारी, अब ये ज्यादा हो रहे हैं। पर्सनल है क्या? नहीं, बता। क्या क्या करवाते हो यार? देख तिवारी, तू रात भर का सोया नहीं है, कुछ खाया नहीं है। मिले जरा दिमाग को ठंडा रख और रिलैक्स हो जा प्लीज। मुंबई में ही है, जो होटल सी कासल। Oh, मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ भी हो तो फोन करना। this is gonna get ugly real quick. चलना चूतिए। तिवारी, ओम शांति। ये ले, काय को बीपी बढ़ा रहा है यार? डाल ले अंदर। देख, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तू गलती कर रहा है। तेरा दिमाग तेरे साथ खेल रहा है और तू खेलने दे रहा है। मैं तो ये साथ में आने के लिए नहीं कहा था, तो खुद ही टंग के आया है। He's a good friend, that's why he came. Trying to keep you. Do you do this often? I mean, sometimes, but mostly by myself. Oh, that's a beautiful place. I don't even remember last time मैं कब बाहर निकली. There was a time when मैं हर नई जगह explore करती थी, बहुत travel करती थी. You know, I used to have a life. अभी भी खत्म नहीं हुई बस। Yeah, then you have kids and it slows down for a little while, but kids will grow up eventually.
देख मैं अभी भी बोल रहा हूँ तेरे को यार, रुक जा यार। तिवारी रुक जा यार। तिवारी निकल यहाँ से, फैमिली मैटर है। Man, this is gonna Well, be and so he's cringe. gonna read into it something that, at least at this point, it is not. Shit. कॉफी पी लेंगे। They're not drinking coffee. Would you like to go for brunch? नहीं वो एक विस्की, सोडा और आइस। Sir, we also have an unlimited drinks offer with brunch. हाँ लेके आना वो ब्रंच। क्या ब्रंच? कितने का है ब्रंच? Sir, for veg it is 2799 plus taxes and non-veg is 3299 plus. हाँ ले कान मार लो यार। एक काम करो, खाली विस्की लेकर आओ और एक ऑरेंज जूस लेकर आओ बस। Sir, no brunch? भाई हम लोग गरीब आदमी हैं, तुम्हारे ब्रंच में हमारा महीने भर का लंच आ जाएगा। Yeah, that was actually really expensive. श्रीकांत, देख लिया उसने। You want to invite him over here? Awkward. उधर देखने के लिए। अरे क्या है? अरे ओह शिट यार, कान लगी तेरी अभी। Looking nice सुची। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ कुछ काम से आए थे, तो भूख लग गई तो सोचा कि यहीं खाने का। तुम क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कोई छोटा मोटा काम। काम के लिए तो आई हूँ, एक फ्रेंड से मिलने। मेरी नई जॉब के बारे में कुछ डिस्कस करना था। हाँ, अच्छी जगह। He didn't even hear what she said. A new job. Hi Suchi. What a surprise. Oh, terrible liar. तुम मिलना चाहोगे अरविंद से? Why don't you come and say hi? ये वही है ना, जिसने अपना जॉब छोड़ के वो स्टार्टअप ज्वाइन किया। श्रीकांत, is that whiskey? तुम यहाँ पे आती रहती हो क्या? रेगुलर? अच्छे क्या? Don't worry, they're fine. Oh no, that's true. ठीक है, तुम अपना इम्पोर्टेंट काम करो। हाँ, तुम्हें भी तो important paperwork करने होंगे। Carry on. Oh man, this is so awkward. You can just see that tension. It's visible. क्या हुआ? Stiffs him with the bill. They both drink and run. Oh, he's got to finish it. He's got to pay for it. Oh, no, he did pay. Catholic? मदर मेरी तुमको ब्लेस करेगी तो नींद अच्छी आएगी। ओह सॉरी, मैंने अगर प्रॉब्लम है तो मैं भी नहीं ऐसे भी। Yeah, he's playing her. Oh, dude, I never trust this guy. He was always trying to spin the story. इनको इधर ही रहने दो। जब ये मेरी यहाँ नहीं होगी तो मदर मेरी मेरा ध्यान रखेगी। तुम प्लीज अभी रेस्ट करो। Oh, man. Well, and they trained them to manipulate others around them, Yeah. and The manipulation he is just probably key. does not even think of it as manipulation, but Of course he is. He knows what he's getting. He knows he's working her down. He's got a limited amount of time, and he knows that he's got to start making these moves, grabbing her hand, saying that he will trust in her religion, that I'm a bad man, but I want to change. Yeah, he knows what he's doing. Shrikant. Yes, sir. We have to raise an alert soon and evacuate the area. We don't have time. I understand, sir, but give us some time, sir. We are almost there, sir. We are working on it. What's the rate? Oh boy. Guys, I'm in. कल्प्रीत आ जाओ। काफी सारी एक्टिविटी हो रही है उसके ब्लॉग पे, ईमेल, यूट्यूब। इज दिस वीडियो आल्सो दैट ही वांट्स सर? जब भी ये भूलने लगे इन्हें इनकी औकात दिखाना फर्ज है। ये तो एमपी देशपांडे है। और लुकिंग एट द टाइम कोड, जब करीम ड्रॉप बॉक्स पे आया था उसके 1 घंटे बाद उसने ये वीडियो देखी। हो सकता है ये वीडियो उसको ड्रॉप बॉक्स में मिला हो। ये
देशपांडे गौरक्षक सिन्हा नाम का एनजीओ चलाता है. That's a clue. भिंडी बाजार के बहुत करीब. देशपांडे घर में आज एक बर्थडे पार्टी है 1 घंटे में. तो यानी ये गेस्ट लिस्ट और फ्लोर प्लान इसी पार्टी का था. अच्छा. Well, they got it. Can they do it in time? अच्छा. एमपी देशपांडे घर पे अटैक होने वाला है. उनको वहां तक पहुंचने से पहले रुकना होगा. कब? Alert all units. Target MP देशपांडे है. Yes sir. Are you absolutely sure? यस सर. उनके पास फ्लोर प्लान और गेस्ट लिस्ट सब है. एक वैन लेके निकले हैं सर. और अगर मेरा अंदाजा सही है तो उस वैन में कुछ न कुछ तो डेंजरस है सर. पार्टी अभी शुरू होने वाली है और अटैक किसी भी वक्त हो सकता है. श्रीकांत, you better be right about this. भगा. क्या अपडेट है? सस्पेक्ट इसी एरिया में है. अब ट्रैक कर रहे हैं. अगर आपको इंटेल चाहिए तो वो लोग सीधा इसी रोड से आएंगे. Well, hopefully they have other roads covered too. चले. चल. अल्लाह अकबर. अल्लाह अकबर. अबे ये यहाँ कहाँ से आ गया यार? अरे हमारी इस बात तो किसी को मालूम तक नहीं था. यार करीम मैं तेरे को बता रहा हूँ किसी ने पक्का अपनी गाड़ मारी है यार. किसी ने भागा. Yep. Well, they gotta have that cut off too, right? Wow. The coordination to film something like this is so incredibly complex. To the cops? Are you insane? Dude, put your hands up. Surrender. What? Actually, did they not see him? I guess they didn't. I don't know. Again, no, they saw him. So, started to say it'd be some pretty lax. Yeah, they would have been fine if his friend didn't bring a gun. Well, I don't know if they would have gotten away or not. No, they wouldn't have gotten away. But they wouldn't have been killed. I mean. I love you, Janari. Are those like firecrackers? Oh man. Oh, they're shooting right on sight. I love shots like this. A lot of times you can just stay in one spot and they will. It's weird. They will magically Yeah, but come to you. then they'll be combing the area, like, you know. No, the who's looking for you. Often you will find that if you just stay. Here it comes. सर टारगेट रोड की तरफ भाग रहा है. शॉट ले लो. Take the shot. Got him.
Where was he hit? He's dead? I want to know what that was that he planted. It's gonna be meat. Oh, like they were like gonna throw meat at him or something? जेके सर हाँ बोलो आपको यहाँ के चेक करना चाहिए Oh, they got them curious. बीफ है सर बीफ ये प्लान था इनका देशपांडे और उनके लोगों को बीफ खिलाने का सब कुछ सिर्फ Dude, they shot at. तो गन्स क्यों था उनके पास यार गन सिर्फ एक ही लड़के के पास थी सर Yeah, but they shot at you. You had to suspect it. And they ran. Right? I mean, everything pointed to them being ये बात बाहर आ गई dangerous. तो टास्क पर हमेशा के लिए ताला लग जाएगा It's my fault. I can take this responsibility. क्या होगा उससे I can see that turning into a scandal. I want to know what it was that he dropped off. Okay guys, listen. It was a terrorist attack. इंटेल थी कि देश पांडे पर ये लोग अटैक करने आए थे वॉर्न किया सरेंडर करने का मौका दिया बदले में इन्होंने फायरिंग की एनकाउंटर में तीनों मारे गए दैट्स द स्टोरी सर और कोई सॉल्यूशन है तुम्हारे पास गलती हो चुकी नाउ इज द टाइम फॉर डैमेज कंट्रोल तुम्हारे अकेले गलती मानने से कुछ नहीं होगा Am I clear? I mean, it was all true except for the part that they were going to give him a chance to surrender. But as soon as a gun is fired, I mean, you have to treat all of them hostile, right? That seems true, but I guess you could have told him to surrender. Was it Shrikant's voice on the radio telling him to take the shot? I couldn't really tell. आ रही हूँ। Sorry, वो चाबी भूल गया था। सुबह के 4 बज रहे हैं। Sorry. He went binging. Guilty conscience. How is it guilty that, you know? Because he knows it wasn't the full story that they're releasing publicly. Yeah, but मैं कुछ बोलना नहीं है। क्या? मैं बाहर कॉफी पीने गई थी उस बारे में। नहीं। जो तुम मुझसे छुपा रहे थे, मुझसे झूठ बोला। श्री, झूठ बोलने की बात ना तुम मत करो, ओके? नहीं, बात को ना घुमाओ मत। अभी बात तुम्हारी हो रही है। मेरी बात क्या? मैं एक कोलीग को मिलने गई थी नई जॉब के बारे में डिस्कस करने। ये नए जॉब का क्या चक्कर है कि अचानक तुम्हें सब कुछ छोड़ के ये नए जॉब के पीछे भागना है? अगर समझने की कोशिश करते तो आज ही सवाल नहीं करते। मैं तो कर रहा हूँ ना। श्री, मैं थक गई हूँ। 15 साल से तुम्हारे और बच्चों के हिसाब से जी रही हूँ। अगर मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ तो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? अरविंद कॉलेज छोड़ के किसी अच्छी जगह पे ज्वाइन किया है एंड ही आस्क्ड मी टू कम अलोंग विद हिम। बस वही डिस्कस करने गई थी। अरविंद ने नया जॉब ज्वाइन कर लिया तो वो अच्छा हो गया।
अरविंद ने जॉब छोड़ दिया तो कॉलेज बुरा हो गया। इतनी साल की हरसी This is a terrible time to be having this conversation. Yeah, but again, when everyone is tired. He's clearly been drinking. तुम्हें ये कैसे पता कि उसी वक्त मैं वहां पे थी? मुझे ट्रैक कर रहे थे? Like you do with your criminals? बकवास मत करो तुम यार। You're talking bullshit. You are impossible. मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। She called him on it though. He knows she's right. Right. मैं किसी 5-star होटल में कॉफी पिलाने लेके गया। एक्सोटिक हॉलिडेज पे नहीं लेके गया। महंगे गिफ्ट्स लाके नहीं दिए मैंने। अगर कर सकता ना मैडम तो सब करके देता मैं। कभी कुछ मांगा है मैंने तुमसे? एक चीज ऐसी नहीं मांगी होगी जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। Don't make me sound like a bloody gold digger. I'm a loser. I'm a loser. सब मुझे यही याद दिलाते रहते हैं। Oh man. Your father thinks that I'm a loser. You think that I'm a loser. सब कुछ छोड़ो यार। यहाँ तक कि मेरे बच्चे भी सोचते हैं कि मैं लूजर हूँ। श्री, every time the same thing. हर बात घूम फिर कर तुम और तुम्हारी इंपॉर्टेंट जॉब पर आ जाती है। Enough is enough यार। I'm sick and tired of this self-pity. Tired of it? तो क्यों बर्दाश्त कर रही हो मुझे? Kids are awake. तुम्हारी महान जॉब के अलावा तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। But I don't know anymore. Oh, and by the way, I've said yes to the job. Salt in the wound. I don't think he's realizing that while he can't tell her, he needs to be able to do the other things to make up the difference for it. And just set the right, expectations and tell her. Riti, Atar, let's go. Chalo. Yeah, this isn't gonna help. एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गौरक्षक के अध्यक्ष एमपी देशपांडे के घर आतंकवादी हमला होने वाला था, लेकिन हमारे जाबाज फोर्स 1 कमांडोज ने आतंकवादी पाकिस्तान से नहीं बल्कि मुंबई के विक्टोरिया कॉलेज। Where'd those guns come from? You know where those guns came from. आराम से। दिमाग को थोड़ा शांत रख अभी थोड़ा। देख हम सबका कलेक्टिव फेलियर है वो। हम सबसे गलती हुई है। अब सबसे गलती हुई है तो उसका सारा भार तो अपने सर पे मत डाल। अगर करीम टेररिस्ट नहीं था, उसने वो ड्रॉप बॉक्स क्यों यूज किया? Right. और वही ड्रॉप बॉक्स क्यों? वही ड्रॉप बॉक्स क्यों? He knows that there's something else there. If he wasn't a terrorist, he at least knows them. Yep, maybe someone set him up. सबसे बड़ा चुतियापा ये है कि वो मादरचोद स्कूटर बॉम्बर के बारे में कुछ पता नहीं चला। अच्छा Oh, are we about to find out? हर बार तुम्हारे अल्लाह की नजर नहीं रहेगी तुम पे, मेरी रहेगी। सीसीटीवी 24/7, दिवाली, दसरा, होली, धूलिवंदन, नवरात्रि, किधर भी कुछ भी लफड़ा हो गया ना, लोगों के साथ गरबा खेलेंगे। Yeah. That's him. They had him. Oh, man. Whew.
wow, another cliffhanger at the end. We finally get to see the lone wolf bomber's face. We get a reveal. Yeah, a reveal. And that they had him in their clutches, you know, and how about that tension between Shrikant and his wife, Suchi? Yeah. I mean, geez, what I appreciate about this series is it is like, not only are they using real language, like that's the language that I hear when I'm like in India and I hear people arguing and like fighting and stuff. Like, so even though it is like, you know, pretty rough words that they're using, Yeah. I mean, that's how like People talk. real Yeah. people talk. Yes. And it felt like a real fight, like between the two of them. It felt real. Like I was like, I felt like I was one of the kids in the house that was just wanting to hide behind one of the doors and be like, Mommy and Daddy They're are fighting. fighting. Let's Yeah. just, you know, go to sleep and pretend it never happened. I can appreciate his frustration with he can't tell her everything that's going on. But yet, at the same time, I don't think he realizes his inaction or unwillingness or whatever the block is of him going out of his way to make up for it. I mean, he it's a given. It's a given that he can't tell her, and she can't know, and the kids can't know. So if that's his calling, his role, his job, he needs to step forward and say, this I can't change. All this other stuff I can change and influence. Yeah, but there are things that he's not going to be able to change, like needing to go to work at the drop of a hat. He just needs to say. But I'm excited to find out what happens next. We're going to do another one, so stick with us. And if you like this video, please let us know by upvoting it so that we continue to make these knowing that you're interested. और अगर अब तक नहीं किया, subscribe करो, share करो, और like button पर थप्पड़ मारो.